Good morning, students. Today we'll start the different elements of production. These are TP, MP, and AP with the help of variable factors. The first one is total product, that is TP. Generally, total product is the sum total of units of output produced by a producer by using some units of variable factor along with the constant factor, that is fixed factor. Their units remain same. Keep remember the units of fixed factor remain same. It will not change. Only the variable factor, which can be changed by the producer to increase the units of output. So the sum total units of output produced by all the units of variable factor along with a fixed factor. Okay, the fixed factor we are using the 1 unit of fixed factor. For example, we are taking one machine, and that or with the help of that machine, say one machine we are using, and over that machine we are using 3 labor units. So the factor ratio is 3 is to 1. That means variable factors are 3 units of variable factor and 1 unit of fixed factor we are taking. So with the help of these factor ratios, or with the help of these factors, if 10 units are produced, so that will be called the total output, the sum total units of output produced by all the units of variable factor. Okay, so these concept TP, AP, and MP we are considering or studying in context of variable factor only. So it is the sum total of output produced by all the units of variable factor. You can say, you can extract the word fixed factors. It is not necessary to use this factor, so this term along with the variable factors. So you can say it is the sum total of output produced by all the units of variable factor. Okay, that means 3 units of laborers has produced 10 units of output with the help of one machine. It is not necessary to include that fixed factor. So 3 units of laborers produce 10 units. Whatever the contribution of each laborer, that doesn't matter. That means one laborer contributed 3 units, second laborer produced 4 units, third laborer produced 3 units and became equal to 10 units. It doesn't matter how much units are being produced by each factor. We are taking the total product, that means the sum total of output. Okay, only the sum total of output is being taken into account. Okay, and we have already discussed that there are two factors, one is fixed and one is variable. And fixed factor we are taking capital goods or capital, that means the machines, and in variable factor we are taking labor. And here it is the example TP, that means when we have used one labor, 10 units are being produced. When we have used second unit of labor, the 12 units are being additionally added, that is L2. That means second unit of labor has produced 12 units. Okay, and when we have applied third unit of labor L3, it has contributed or added 13 more units. Okay, first laborer has produced 10 units, second added 12 extra units, third added 13 more units. Okay, the total of all the 3 units of labor has become 35 units. That means तीनों जो laborers हैं उन्होंने total मिलके 35 units produce किए. एक ने 10, दूसरे ने 12 और तीसरे ने 13 units produce करके total जो है 35 units produce की है. Okay, so this is the TP. Okay, 10 फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन है, 12 सेकंड यूनिट ने प्रोड्यूस की है, थर्ड जो 13 है वो थर्ड लेबर ने प्रोड्यूस की है. तो तीनों को ऐड करेंगे तो 35 यूनिट्स आ जाएंगे. दैट इज टोटल प्रोडक्ट. द नेक्स्ट वन इज marginal product. It is MP, not TP. Okay, marginal product as the name suggests, marginal, that is the difference of TP. टोटल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आएगा, जैसे कि हमने पिछले यूनिट्स में देखा था, टोटल प्रोडक्ट 10, 12, 13. Okay, so the difference in TP, so here 10, 12 and 13 were the individual units of product produced by each labor unit.
these were not the total product. Okay, these were the total product of individual units of labor, first, second, third, not 1 2 3. दैट मीन्स ये 12 यूनिट्स हैं, ये दो लेबरर्स ने प्रोड्यूस नहीं किए, सेकंड लेबरर ने प्रोड्यूस किए, तो इंडिविजुअल प्रोडक्शन है ये। एंड 30 यूनिट्स जो है वो तीन लेबरर्स ने प्रोड्यूस नहीं किए, थर्ड लेबरर का कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो टोटल इज 35। ओके, तो 3 यूनिट्स ऑफ लेबरर्स or 3 laborers has produced 35 units. Okay, and if we say 4 laborers, okay, 4 laborers produce or produces 38 units. Okay, अगेन अगर हम 4 लेबर्स को बाइफरकेट करें कि फर्स्ट लेबर ने जो है 10 यूनिट्स, सेकंड ने 12, थर्ड ने 13 एंड फोर्थ ने जो है 3 ही यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, तो दैट टोटल 4 जो लेबर्स हैं उन्होंने मिलके 38 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखें तो 3 लेबर्स ने 35 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं एंड 4 लेबर यूनिट्स ने 38 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं। सो दिस इज टीपी ऑफ total product of 3 laborers and this is TP of 4 labor units, TP4. Okay, so difference of these two total products, TP at 3 and TP at 4, that means 3 laborers ने total production 35 units का किया है and 4 laborers ने 38. So the difference of these two total products, that is 3 units, that will be called marginal product. Okay, so marginal product is the addition to TP, मीन्स टीपी में जो एडिशन हुआ है, जैसे 35 यूनिट से हमने 38 यूनिट्स प्रोड्यूस की विद द हेल्प ऑफ फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर। ओके, चौथी यूनिट ऑफ लेबर जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास टोटल 38 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, जबकि 3 लेबरर्स 35 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, फोर्थ लेबर जब इंट्रोड्यूस किया गया तो 38 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई हैं। ओके, सो 35 to 38 जो एडिशन हुआ 3 यूनिट्स का, okay, that is called marginal product. Okay, तो addition to TP, तो total production में जो 3 units का addition हुआ वो कब हुआ, जब हमने एक extra unit, one more unit of labor is used. Okay, so marginal product is addition to TP. TP में जब addition होता है, ठीक है, additional TP जब produce की गई, या हम कहें कि TP increase होता है by increasing one more unit of labor. Okay, increase in TP when one more unit of labor is used, or by increasing one unit of labor, increase in TP by increasing one unit of labor, that is called marginal product. Okay, ये TP नहीं है, ये MP है। Okay, marginal product MP से addition to TP। Okay, जो हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया 35 to 38 एडिशन 3 यूनिट्स का हुआ कब, जब हमने फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर। इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर हम अप्लाई करेंगे तो ये 38 से इंक्रीज होकर मे बी 44 हो जाए या 42 हो जाए या 40 हो जाए। ओके, सो एडिशन हुआ 2 यूनिट्स का टोटल में एडिशन। ओके, दिस इज ये 40 जो है ये टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट है, टोटल आउटपुट है 5 लेबर्स का, फिफ्थ का नहीं है, 5 लेबर्स का। 4 38 प्रोड्यूस कर रहे थे, 3 35 प्रोड्यूस कर रहे थे और 5 जो है 40। तो हम इनका डिफरेंस जब निकालेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा, ओके, 3 to 4 हुए तो डिफरेंस 3 यूनिट्स का आया, फोर्थ यूनिट ने 3 एक्स्ट्रा यूनिट, फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर और फोर्थ लेबर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 3 यूनिट्स और 3 मोर यूनिट्स, सो दैट 3 यूनिट्स विल बी MP. ओके, सो and we have again we have seen that it is the result of change in variable factor only. That means we can, or the producer can only change the variable factor, the fixed factors will remain constant, additional unit fixed factors की ऐड नहीं होंगी, हम सिर्फ variable factor को ही change कर सकते हैं। So it is the result of change in variable factor only. marginal product जो है variable factor में change होने की वजह से ही आता है, and algebraically it is expressed as MPN is equals to TPN minus TPN minus 1. Here n means the number of labor units, n represents the number of labor units. Okay, that means 2 laborers, MPN, and if we are taking the labor units are 2, so MP at 2 units of laborers is equals to TP at 2 units of laborers minus TP at 2, because n की वैल्यू हमने 2 ली है तो n को हमने पुट कर दिया 2, 2 minus 1, so that is TP at 2 minus TP at 1 unit of labor. That means जो टोटल प्रोडक्शन 2 लेबर्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया दैट इज़ 20 फॉर एग्जांपल, एंड जो प्रोडक्शन एक लेबर ने प्रोड्यूस किया दैट इज़ 15, सो MP at 2 units of laborers will be MP2 is equals to 5 units.
Okay, that means the second labor unit has contributed or added 5 more units to the total output. Okay, जब second unit of labor हमने यूज़ किया तब 5 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड हुई, बिकॉज फर्स्ट जो लेबर यूनिट थी वो 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, दोनों ने मिलके 20 किया, तो सेकंड ने कितना ऐड किया, 5 यूनिट्स. ओके, दैट इज एमपी. अगेन एमपी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 20. दैट मीन्स अगर 30 दो लेबर्स का कंट्रीब्यूशन है और 20 अकेले एक यूनिट ने प्रोड्यूस किया है, तो जो सेकंड यूनिट ऑफ लेबर हमने ऐड की है उसने 10 कंट्रीब्यूट की हैं यूनिट्स, 10 यूनिट्स एडिशनल ऐड की गई है, एडिशन हुआ है टीपी में. नेक्स्ट वन इज एपी, एवरेज प्रोडक्ट. इट इज सिंपल, एवरेज है ये प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट का. एवरेज प्रोडक्ट मीन्स द पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर. दैट मीन्स how many units of output are being produced by every unit of labor. जब हर एक यूनिट जो है कितना यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है, कितना यूनिट्स कंट्रीब्यूट करती हैं. ओके, दिस इज पर यूनिट ऑफ लेबर, आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर. हर एक्स्ट्रा नॉट एक्स्ट्रा, हर एक यूनिट जो है लेबर की हमने यूज़ की है वो कितना यूनिट्स का कंट्रीब्यूट करती है टोटल प्रोडक्ट में. ओके, दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू simple mathematical operation TP over L, TP upon L. that means total product अगर 30 यूनिट्स हैं एंड 5 लेबर यूनिट्स हमने यूज़ की हैं, तो पर हेड जो है या पर लेबर यूनिट जो हमारा आउटपुट आएगा वो 6 यूनिट्स का आएगा. मतलब हर एक लेबर ने जो है 6 यूनिट्स कंट्रीब्यूट की हैं, 6 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं एंड टोटल बिकेम 30 यूनिट्स. पाँचों लेबर्स ने मिलकर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं. दैट इज़ एवरेज प्रोडक्ट. Next concept is, can MP ever be negative or can MP become negative? So the answer is yes, MP can become negative. That means marginal product जो है negative हो सकता है, zero भी हो सकता है, because the fixed factors have a maximum capacity to produce. फिक्स फैक्टर्स जो हम या कांस्टेंट फैक्टर्स जो हम लेके चल रहे हैं उनकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने की. बियॉन्ड दैट कैपेसिटी द प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड by only increasing the variable factor or variable factors only. That means अगर फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी को हम यूज़ कर चुके हैं उसके बाद वेरिएबल फैक्टर ही इंक्रीज़ किए जाएँ तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा. बियॉन्ड दैट लिमिट इफ़ वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड द टोटल प्रोडक्ट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ओके, अगर हम उस लिमिट के बाद मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद फिक्स फैक्टर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है एंड दैट ड्यू टू दैट डिक्रीमेंट द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव. हाउ? से द टोटल प्रोडक्ट इज 30, 35. See, we have the table. Mama, क्या कर रही हो? When we are using 1 unit of labor, the TP was 20 units. That means individual labor unit has produced 20 units. Average product was again 20 divided by 1 and MP is 20, the difference of TP. So initially when we were not using any unit of labor, the TP was 0. So difference of 20 and 0 was 20. So MP is the difference, that is 20. When we have used another unit of labor, that means total of 2 labor units are being used, the total product has increased and reached to 36 units. Okay, 20 to 36 units. Now if we calculate MP, okay, TP is increasing 20 to 36 using 2 units, so the difference is 16. Okay, initially 0 to 20, that means जब कोई भी यूनिट ऑफ लेबर नहीं थी तो आउटपुट 0 था. जब एक यूनिट ऑफ लेबर हमने यूज़ किया तो उस सिंगल यूनिट ने हमें 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दिए. तो MP was 20, difference of 0 and 20. When we have used another unit of labor, that means both the laborers are producing 36 units. This is not the single contribution of second unit of labor. Okay, that is the contribution of both and that is total product. Okay, 36 units are the total contribution of both the units of laborers. If we talk about the single or the contribution of the single unit of labor, that is AP 18 units. That means 36 divided by 2. The single एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, 18 units. Okay, MP is 16. Okay, then
3 laborers, when we have used or implemented 3 units of laborers, the total output became 33. That means here the total output started decreasing. Reason being, same, when more variable factors are implemented, that result into imbalanced factor proportion. ओके, ये फैक्टर प्रोपोर्शन को इम्बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा पर यूनिट आउटपुट है, आउटपुट पर यूनिट या एपी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. दैट मीन्स अगर हम 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो उस 1 हेक्टेयर से हम जितना मर्जी आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकें. क्योंकि एक पॉइंट है कि लैंड की फर्टिलिटी के बाद या लैंड की मैक्सिमम फर्टिलिटी के बाद हम आउटपुट नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं. इन दैट केस अगर हम फैक्टर प्रोपोर्शन इम्बैलेंस करेंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा लेबर्स हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उनके बीच डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वर्क शर्किंग कंडीशन, वो काम चोर हो जाएंगे, कोई काम करेगा कोई नहीं करेगा, तो टोटल आउटपुट जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगी. दैट्स वाई ड्यू टू इम्बैलेंस्ड फैक्टर प्रोपोर्शन हमारा एपी जो है वो रिड्यूस होने लगता है, टीपी भी रिड्यूस होता है, और अल्टीमेटली एमपी नेगेटिव हो जाता है. टीपी और एपी जो है वो रिड्यूस होंगे, लेकिन एमपी नेगेटिव हो जाएगा. रीज़न बीइंग इम्बैलेंस्ड फैक्टर प्रोपोर्शन, और इसकी वजह से फैक्टर्स की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होने लग जाती है. ड्यू टू imbalanced factor proportion, the factors, individual factors started getting reduced, their efficiency or efficiency per unit of labor gets reduced. That's why MP starts going into negative. The next one is returns to a factor or the law of variable proportion. Returns to factor states that when more and more units of variable factor, okay, variable factor is labor, when more and more units of labor factor or variable factor is used, initially MP rises, then starts declining and may become negative. ओके, जैसे हमने पहले देखा कि इनिशियली तो MP जो है राइज होगा, देन वो डिक्रीज होता है, देन नेगेटिव होता है. ओके, so these are the assumptions. It is not necessary that all the conditions or all the points or all the stages may be observed at one point of time. Okay, they may vary. एक point of time में तीनों stages या तीनों phases को हम observe करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो vary कर सकता है. किसी में declining and negative हो, किसी में हम सिर्फ तीनों stages देख सकते हैं. Initially वो rise करेगी, then decline होगी, then negative हो जाएगी. Okay, and causes imbalanced factor ratio. Okay, and we know that there is always an ideal factor ratio. जो भी factors of reduction हम यूज़ करें उनके बीच में एक ideal factor ratio होता है. एंड वो आइडियल फैक्टर रेशियो कब होता है? ये आइडियल फैक्टर रेशियो होता है जब एमपी मैक्सिमम होता है. ओके, हमने कहा कि एमपी राइज होता है इनिशियली, देन डिक्लाइन होता है. तो राइज होके जब वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा तो कभी ना कभी उसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा. ओके, दैट मीन्स 10, 12, 15, 14. Okay, here 15 is the maximum point. Okay, that means this is the point of output where we are using ideal factor ratio. Okay, say 5 units of labor and 1 unit of फिक्स्ड फैक्टर. ओके, फिक्स्ड फैक्टर का जो नंबर है वो सेम रहेगा. इनिशियली वी वर यूजिंग मे बी 4:1, 6:1, बट 5:1, 5 units of labor and 1 unit of capital. That is the ideal ratio, or that is considered as the ideal ratio because with the help of these units of factor, 5 units of labor and 1 unit of land, we were able to produce maximum MP. Okay, this is MP not TP. तो हम ये नहीं कह सकते कि we were able to produce 15 units of output. Okay, ये marginal है. Okay, that means इस margin की वजह से हमारा TP भी अपने highest unit पे या highest जो proportion है उस पे पहुंचा होगा. Okay, because this is the difference of TP. तो यहाँ पे जो MP का highest है उसी की वजह से टीपी भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा. दैट मीन्स वहाँ पे टीपी भी मैक्सिमम रहा होगा या हाईएस्ट रहा होगा. ओके, सो उस आइडियल फैक्टर रेशियो जो में हमारा जो एमपी मैक्सिमम रहा. एमपी में बिकम जीरो और नेगेटिव व्हेन वी यूज़ एक्सेसिव यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ओके, जो फिक्स फैक्टर की एक कांस्टेंट यूनिट के साथ हम वेरिएबल फैक्टर की जो है एक्सेसिव यूनिट्स यूज़ करते हैं तो एमपी डिक्रीज होते हुए ज़ीरो पे जा सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, MP may rise if either the fixed factor is underutilized or by reducing the number of labor. Okay, दो पॉइंट्स में MP राइज कर सकता है. या तो MP तभी राइज करेगा जब हमारा फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी हम यूज़ नहीं कर पाए हैं. दैट मीन्स देयर इज स्टिल अ स्कोप
that we can increase more variable factors to increase the output. Okay, TP increase होगा जब हम extra unit of labor use करेंगे, क्योंकि हमारा जो fixed factor है उसकी maximum capacity हमने अभी use नहीं की है, तो variable factor हम बढ़ा के total output बढ़ा सकते हैं, उस fixed factor की maximum capacity को extract कर सकते हैं. Okay, या फिर एक पॉइंट आ गया है जब हमने एक्सेसिव यूटिलाइजेशन कर लिया है वेरिएबल फैक्टर्स का, तब हमारा टोटल आउटपुट रिड्यूस होने लग जाएगा. तो उस केस में अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें या निकाल दें वहाँ से, तो हमारा जो टीपी है वो भी इंक्रीज होएगा, एज अ रिजल्ट एमपी भी इंक्रीज होएगा. ओके, सो दीज वर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन.